Good morning, everyone. My name is Dr. Nazneen Khan, and I am a senior lecturer in Department of Orthodontics and Dental-Facial Orthopedics and Index Institute of Dental Sciences in Goa. The today topic is orthodontic appliances or general concept. Introduction. Orthodontic appliances are the devices that bring about necessary tooth movement or modify the growth of the jaws in order to achieve the triad of functional efficiency, structural balance, aesthetic harmony of the orofacial region. The orthodontic appliances are how the force is applied to a tooth or a group of a teeth and their supporting structure to bring about necessary biomechanical changes within the bone to allow the required tooth movement. Classification of orthodontic appliances classified in orthodontic appliances and orthopedic appliances. In orthodontic appliances, these appliances bring about the changes within the alveolar bone only and affect only tooth movement. Usually, these are the intraoral appliances. When we're talking about the orthopedic appliances, these appliances bring about changes in the basal bone. Basically, skeletal changes जो orthopedic appliances है वो skeletal changes कराते हैं. Currently, they affect the alveolar bone and dental changes. These are the orthopedic. These are various type of the orthopedic appliances are available. The most commonly used in our clinical practice is the headgear chain curve. Some intraoral myofunctional appliances are like activator, hairbrush. Depending on the type of the forces, the orthodontic appliances may be classified as a mechanical appliances, the myofunctional appliances. The mechanical appliances are the appliances that generate force through their component part. They consist of active components through which they exert force on a single tooth or a group of a teeth and their supporting structure in predetermined direction. The mechanical appliances, the active component are usually spring, elastic, and screw. These are the removable and the fix. When we're talking about the removable appliances, the various removable appliances we use in a patient, the most commonly we use in patient is the Hollis appliances with active labial bow, spring, screw. The Hollis appliances are given in the upper arch with active labial bow. And in some patient, we require some springs also. So we can deliver, the force can be delivered with the spring or the screw. अब जो एक्टिव लेबल जो लेबल वो होगी वो एक्टिव भी हो सकती है पैसिव भी हो सकती है इन सम पेशेंट में रिक्वायर एक्टिव लेबल को the fixed appliances various fixed appliances are be in available for example bags edgewise straight wire के अलावा pre adjacent adjusted edgewise appliances तो जो फिक्स में होता है वो यूज होता है स्ट्रेट वायर अप्लायंसेस सबसे पहले बैग्स अप्लायंसेस आया था फिर एज वाइज आया फिर स्ट्रेट वायर तो बैग्स अप्लायंसेस में वेरियस डिसएडवांटेजेस थे क्योंकि इस टेक्निक में हमें हर टूथ पे बेंड करना पड़ता था उसके बाद हम ब्रैकेट लगाना होते थे तो ये एक लंबी प्रोसीजर होती थी जो स्ट्रेट वायर अप्लायंसेस आया इसमें हमारा चेयर साइड टाइम कम हो गया और इसमें हम डायरेक्ट टूथ के ऊपर ब्रैकेट को बॉन्ड कर सकते हैं अब बॉन्ड हम दो तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेथड फर्स्ट द डायरेक्ट बॉन्डिंग और इनडायरेक्ट बॉन्डिंग myofunctional appliances are passive loose fitting appliances that restrict the abnormal forces fitting on the dentition or transmit the natural force from the orofacial musculature to the tip and alveolar bone through the medium of the appliances.
The functional appliances are mainly used for the treating discrepancy of the basal bone of the jaws. These treatment procedures form a part of the interceptive orthodontic and are called growth modification procedure. Usually, myofunctional appliances do not contain active component. However, some of the modified myofunctional appliances may have the active component incorporated into them. The removable functional appliances are various. For example, activator, Frankel, and the fixed myofunctional appliances are the Herbers, dispatch, and both mechanical and myofunctional appliances can be classified as a removable myofunctional appliances and the fixed myofunctional appliances. When we talk about the removable appliances, the removable appliances, as the name suggests, are the appliances that can be inserted into and removed from the oral cavity by the patient. The removable appliances have many advantages. Proper oral hygiene can be maintained and need less chairside time. The main drawback of these appliances is need for patient cooperation. Mechanically, they cannot perform complex tooth movement that two at a time. They bring about the simple tooth movement by the tipping. When we're talking about the fixed myofunctional appliances, fixed appliances in orthodontic terminology means by the fixed mechanical appliances. Thus, they are fitted into the tooth and can be removed safely by the qualified orthodontist. These appliances are most commonly used and versatile in nature. They have many advantages over the removable appliances. These appliances offer better control over a tooth movements and they do not need much patient cooperation. These appliances can bring about various tooth movements simultaneously at a time, including tipping, bodily movement, intrusion, extrusion, rotation, है ना, इंट्रूजन कराएगा, एक्सट्रूजन कराएगा, रोटेशन. अब ये जो अप्लायंसेस होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं एज वाइज, प्री एडजेसेंट एज वाइज एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड स्ट्रेट वायर अप्लायंसेस. अब अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इफेक्ट. स्ट्रक्चर इफेक्ट में आएगा अप्लायंसेस दैट मूव स्केलेटल structures and appliances that move the dentoalveolar structures. The appliances that move the skeletal structures are the myofunctional appliances and the orthopedic appliances. जो myofunctional appliances आते हैं वो हर्बस, जेस्पर, जंपर, एक्टिवेटर होते हैं. एंड ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस जो होते हैं वो हेड गियर, चिन का फेस मास्क होता है. जो मायोफंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं ये जो जेस्पर, जंपर, एक्टिवेटर, इन सबको हम इंट्राओरली यूज करते हैं और ये रिमूवेबल भी होते हैं एंड फिक्स भी होते हैं. जो ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा ओरल यूज किए जाते हैं. ये एक तरीके के एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ओरल फोर्स लगाते हैं, है ना, और इसमें हम स्केलेटल और डेंटल चेंजेस करवाते हैं. मेनली हम बच्चों में इस अप्लायंस को हम यूज करते हैं. अब जो अप्लायंसेस एल्वोलर स्ट्रक्चर, हमारा डेंटो एल्वोलर स्ट्रक्चर में चेंजेस कराएगा वो है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस. जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की जैसे कि ब्रेसेस होते हैं, जो ब्रेसेस से हम जिनका ट्रीटमेंट करते हैं वो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस में आएगा. वो इंट्राओरल होते हैं और फिक्स होते हैं और ये क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. Depending on the type of the force exerted, functional appliances and the mechanical appliances, it can be divided into two parts, fixed and the removable. अगेन वही फिक्स जो होंगे वो हर्बस, ट्विन ब्लॉक, जेस्पर, जंपर होंगे और रिमूवेबल जो होगा वो एक्टिवेटर, फ्रैंकल, ये होंगे. When we're talking about the mechanical appliances, it can be a semi-fixed, fixed, and the removable. Semi-fixed are the lip bumper, fixed are the edgewise or bags, straight wire appliances. Removable are the Holly's appliances with active labial bow, spring, and screw. जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस होते हैं हम उनके दो तरीके से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक उसके दो पार्ट होंगे, एक्टिव एंड पैसिव. And when we're talking about the passive appliances as such do not apply any active forces and are mostly used to retain teeth that have been moved to their desired location. जो passive appliances are the Holly's appliances, wrap around retainers.
ये अप्लायंसेस हम आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसेस आफ्टर ब्रेसेस हम ये अप्लायंसेस देते हैं टूथ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन करने के लिए. दे डू नॉट अप्लाई फोर्सेस टू अफेक्ट द टूथ मूवमेंट, है ना. वही हॉलीज एंड द रैप अराउंड, इट कैन बी एक्टिव और अ पैसिव और बोथ रिमूवेबल एंड द फिक्स. Ideal requirement for orthodontic appliances. Any appliances that is used for orthodontic purpose should fulfill certain requirements. These requirements can be discussed under the following heading. In biological consideration, physical and mechanical consideration, aesthetic consideration, hygiene consideration, technical and economic consideration. When we are talk about the biological consideration, in biological consideration, the material and the component used in its fabrication should be biocompatible, should not produce any allergic, any toxic reaction in oral cavity. The appliance should not be any discomfort in oral cavity. The appliances should bring about the desired tooth movement within a short time without desirably affected the normal dental structure, such as the root resorption. बायोलॉजी रूट एडॉप्शन नहीं होना चाहिए, कोई पेरिडोंटल चेंजेस नहीं आना चाहिए, टूथ वाइटलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, रिसेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट में, मोबिलिटी नहीं हो. तो इन सारे फैक्टर्स को हम बायोलॉजिकल कंसिडरेशन में लेंगे. इजी पेशेंट एक्सेप्ट कर ले, बायोकम्पेटिबल, कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसे एलर्जी ना हो इस मटेरियल से, इन सब चीजों को इसके अंडर हम रखते हैं. It should not bring about the unwanted tooth movement. For example, हम tooth movement कराना चाह रहे हैं, जैसे ऑर्थो में हम टिपिंग, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, है ना, रोटेशन करेक्शन, ये कराना, अनवांटेड टूथ मूवमेंट ना हो. The appliance should not interfere with normal growth. अब जैसे ग्रोइंग है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को डिस्टर्ब ना करे वो अप्लायंस. It should not interfere with the normal routine function of the teeth and their structure of the oral cavity, such as the mastication, swallowing, speech. ये अप्लायंसेस जो है, ये पेशेंट की नॉर्मल डेली रूटीन चीजों में उसे डिस्टर्ब ना हो, उसको कंफर्टेबल, पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा तभी वो इस अप्लायंसेस को पहन पाएगा. अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस अप्लायंस को नहीं पहनेगा. अब अगर वो इस अप्लायंस को पहन के इजीली बोल पा रहा है ना, अच्छे से चबा पा रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसके लिए इजी होगा उस अप्लायंस को पहनना. बट अगर कुछ अप्लायंसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत बल्कि होते हैं और अगर पेशेंट उनको पहन रहा है, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन अप्लायंस को नहीं पहनेगा. तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो अप्लायंस हम डिलीवर कर रहे हैं वो इजी, पेशेंट कंफर्टेबल हो उसके साथ और उसे ठीक से पहन. फिजिकल एंड मैकेनिकल कंसिडरेशन. The appliance should not be too bulky. At the same time, the appliance should be strong enough to withstand masticating forces. The component of the appliances should have the ideal properties such as the modulus of elasticity, strength, springiness, and to deliver the controlled force of desired intensity, direction, duration. The third is the technical and handling properties. Ideally, the appliance should be universally applicable, must be able to handle various malocclusion. The appliance should be simple to fabricate and manipulate. The next is the hygienic requirement. The orthodontic appliance should not interfere with the daily oral hygiene maintenance. Ideally, it should be self-cleaning. If not, it should be easy to clean with the common available cleanser. Aesthetic requirements. One of the main requirements of the orthodontic appliance is that it should be aesthetically acceptable. The appliance should be in a aesthetic manner. Economical consideration. Preferably, the appliance should be a low cost, and if any component is lost or broken, it should be replaceable. Various common appliances we used in clinic, in our college. Class 3 appliances,
open bite appliances, activator, Frankel, twin block. The best time to start the functional appliance therapy in a late mixed dentition. This is the best time for the when we start the functional therapy, the removable or the fixed functional appliances. This is the best time. Advantage of the advantage of the pubertal growth spurt should be taken. Girls and boys, along with early mature, should be assessed individually. Limitation and the complication of these appliances are discomfort as both upper and lower teeth, mainly depending upon the patient compliance, can be used only if the favorable horizontal growth pattern present in the class 2 correction. हम इसे class 1 patient में या vertical growth patient में हम इसको use नहीं कर सकते. हम इन्हें सिर्फ उन्हीं patient में use कर सकते हैं जो mallocclusion में class 2 होगा और जो horizontal grower होगा. It should be removed during mastication, particularly when the strongest force are applied. Or it can be removed during the uh, sport time. May interfere with speech. Treatment duration is often long. The conclusion is the global demand for orthodontic without braces continue to grow. It is the option that may parents and the patient would prefer. Myofunctional orthodontics offer various alternate traditional orthodontic method. In functional appliances, the appliances that produce all or a part of its effect by altering the position of the mandible and the maxilla. These are the references. Thank you.